Hi there. This is the last lecture of our course. Basically हमने सारे contents कर लिए हैं, बस ये इसकी slides भी actually upload हो चुकी हुई हैं, सारी examples हम कर चुके हैं, but video form में सिर्फ इसको ऊपर डालना एक रह गया था हमारा. This is the topic on inheritance, and this is not a difficult topic at all. And that's what we will be covering in this lecture. Before we begin, let's do a little recap. So, अगर आपने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिछले वाला लेक्चर वीडियो जाके दोबारा से देखें एंड देन कम बैक, especially when we were doing building objects using other objects. अब यहाँ पे as you can see that you have already given a point class, और आपको पता है कि point class के अंदर there are two coordinates x and y, so the data is there, and when we make an object for point class, it is going to create a black box for that object. Anyways, given the point class, we create a class called circle. अब circle के अंदर as you can see उसके constructor में तीन चीजें जा रही हैं, x, y and radius, because that's what defines the circle. But the thing is that यहाँ पे जो coordinates हैं वो explicitly specify करने की बजाय what you could have done is you should have done the point class, because point class आपको already available है और उसके internals आपने निकाल के बाहर रख दिए हैं x y की फॉर्म में, which means कि आपने black box को काट के उसके internals निकाले. You have violated abstraction. That's a very bad thing. तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? You should have created a point object here directly instead of using the internals of that point. So I mean, इसको abstract करने का मकसद ये था ना कि आप black box को as it is use कर सकें instead of using the coordinates. So what's the solution? The solution is to use the point, is individual coordinates को delete करें or then use center, which is the point object. Now what happens here is your circle black box, इसके अंदर you have another smaller black box inside it, and that smaller black box contains x and y, and circle का जो black box है that contains the point and also the radius. Cool. And this is the right way to do. Another thing that we need to remind ourselves is that Python is not great at encapsulation. What do we mean by that? Well, basically, let's say अगर आपके पास एक person class है और इसके अंदर there is a constructor जिसके अंदर it's just setting the name and that's it. When you create an object for a person called Zen, right? So now what happens is you can access the data from inside, from the outside, जो कि आपको directly access नहीं करना चाहिए, आपको किसी getter method के through करना चाहिए, लेकिन Python cannot stop you doing that. And you can change data from the outside. ये भी बहुत ही गलत बात है. Python is आपको ये करने से नहीं रोक सकता, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है. बाकी लैंग्वेजेस में they have some mechanisms in place, but Python there is none. So you can read data from outside, you can change data from outside, and you can add new data from outside. That is horrific. ओके, सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एज नहीं डाली, बट ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपने डॉट एज इक्वल से 20 किया तो उसने ब्लैक बॉक्स के अंदर एक नया वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल जाके बना दिया. वो देखता है कि इंस्टेंस वेरिएबल पहले से मौजूद है, नहीं है तो बना दो. दैट्स व्हाट इट इज. सो दैट्स नॉट गुड. लेकिन आपको ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज दैट्स व्हाट पाइथन इज, राइट. बल्कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक लाइन नंबर 7 में जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम चेंज किया फ्रॉम जैन टू अली, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ब्लैक बॉक्स उसके अंदर सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, नेम अली, नेम जैन एंड देन जैन चेंज टू अली. दैट्स व्हाट इट इज. बट व्हेन यू डू p.age, it's going to go to that black box, it's going to search that instance variable age. Inside that, it'll not find it, and then it'll create a new instance variable at that point outside the constructor, बल्कि way outside the constructor, and then it's going to set that value to 20.
Not good, but that's what it is. So storing many objects. So this is basically a small exercise coming up. उसके लिए we need this definition for a class called animal. इसके अंदर ये brackets के अंदर object लिखा हुआ है. Just ignore this for a second. अब यहाँ पे animal object के अंदर there are two instance variables, age and name. Age is being set to the parameter and name is being set to none. यानी कोई नाम नहीं set करे, it doesn't matter for now. But then we are overriding the string method, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि just when you could try to convert this animal to string, just print out animal and the name of the animal and the age of the animal, and that's about it. So basically now then line number 8, you create a new animal with age 2, name is set to none. अब यहाँ पे आप explicitly name set कर रहे हैं, which is very bad programming practice, but just for the sake of an example, we are setting it to kitty so that you see some message here, वरना आपको वहाँ पे none नजर आएगा. And you should not be doing this directly, you should not be accessing it this way. ये lecture के बिल्कुल आखिर में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको जो कि आपने most likely मैंने क्लास में नहीं बताई हुई, कि आपने इसको डायरेक्टली कैसे एक्सेस करना है. But that's an illusion of direct access, it will not be actual direct access. And then you do print cat. When you do print cat, print is going to try to convert this cat into a string. And when it tries to convert it into a string, it's going to search for this method called underscore string in our class. It finds it, then it calls it and returns the string. अगर इसको नहीं मिलता, it's going to return that pretty weird string जो कि आप क्लास में देख चुके हैं, ये दूसरी लेक्चर वीडियोस में देख चुके हैं जो कि हमने पहले की हैं, काफ़ी डिटेल से किया हुआ है. If you don't remember, don't recall, then you can go back and check those out. Okay, actually let's quickly demonstrate here right in Thorny, and if we run it and it says animal kitty 2, right? अगर इसको हम comment भी कर दें, so then it's going to say animal none and 2, right? So that's what it says. So this is basically a sample code. It says that you have given list जिसके अंदर bunch of integers, a bunch of objects पड़े हुए हैं. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ positive integers को देखना है और positive integers को age बना के एक नया animal create करना है, और एक dictionary आपने return करनी है जिसमें age is going to be the key and the animal which you created is going to be the object for that key. So the way we do it is we create a new dictionary, and then in every entry in this list L जो कि parameter के through pass होके आ रही है, we say that if this object is an integer, अगर है और integer भी है और अगर n से बड़ा है, तो फिर you create a new key and a new value which is the animal. You create a new animal in the dictionary and you add it in the dictionary. Otherwise अगर let's say वो type है उसकी a, तो यहाँ पे वो test fail हो जाएगा if type of a is equal to integer, because that's going to be false because it's a string. और यहाँ -5 ये test यहाँ पे true हो जाएगा, pass हो जाएगा, but दूसरा test fail हो जाएगा because -5 is less than 0. So यहाँ पे it's not going to create a new entry for this animal. And when you print these animals, you'll see that, let me actually show you what it looks like here. Okay, that's an error because हमने animal class को delete कर दिया था. Let me keep that animal class here, add this function again and try to run. And यहाँ पे अगर हम animals देखें तो अब देखेंगे कि this is a dictionary. इसमें it has key value pairs. So basically this is the key and this is entire weird thingy is the value which is represented as this weird thing. Basically this is an object, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने animal के अंदर string method specify तो किया हुआ है, तो फिर उसने इसको nicely क्यों नहीं return किया? And the answer is कि जो print function है उसको dictionary का पता है कि it's going to print the dictionary, but it's not going to go inside the dictionary and print
all of these objects nicely. So what we have to do is we have to do that explicitly ourselves. Instead of doing print animals, what we could do is we could iterate this dictionary one by one, all the items, and then print these animals one by one again. So here what we can do is we could use this syntax, and then when we run this code, you'll see it prints our key value pairs very nicely. So ये तो पुरानी चीज़ थी, इसमें कोई नई इतना नहीं है complex चीज़. Okay, now so this is a second slide which you need to try. You should pause the video and give it a shot. इसमें हमने करना ये है कि आपके पास दो लिस्ट्स हैं. एक लिस्ट में एज है, दूसरे लिस्ट में बेसिकली नाम है एनिमल्स के. आपने करना है लिस्ट 1 का पहला आइटम को अटैच करना है लिस्ट 2 के पहले आइटम से और उनका एनिमल बना के एक तीसरी लिस्ट में डाल देना है. फिर आपने दूसरा आइटम पकड़ना है लिस्ट 1 में से, दूसरा आइटम पकड़ना है लिस्ट 2 में से, और उन दोनों को कंबाइन करके एक एनिमल बनाना है और उसको डाल देना है नई लिस्ट में. और जब आपके पास सारे एनिमल्स बन जाएं, आप वो लिस्ट रिटर्न कर देंगे. So give it a shot and think about it. Pause the video and we'll come back in 3, 2, 1. Okay, so let's try this. Have to press enter. Okay, we are set. So how do we attach the first animal, the first item in the first list and the first item in the second list and create an animal? So let's create the result, which is an empty list for I in range length of L1. Can we get away with this? Yes, because the size of both of the list is equal. और हमें दोनों का इंडेक्स चाहिए. So basically now what we do is age equals to L1 का ith element is going to be age, or name equals to L2 का ith element is going to be the name, and we create a new animal with the age and the name. I don't think there is a name parameter here, but let's quickly give that a name parameter so that our code works. Okay, and then what we do is we append results dot append the new animal, and then finally we simply return result. And then when we run the code, you'll see that it creates these animals, the name and accordingly, and their ages combined. Basically three animals that we give it. All right, so that being said, hierarchies, that's a new topic. And before we begin, I suggest that you pause the video and go grab yourself a cup of coffee or a soft drink or something like this. Okay, coming back. Hierarchies क्या हैं? Basically आपने hierarchies real life में भी देखी होंगी. ख़ास तौर पे पुराने ज़मानों में तो बहुत ही ज़्यादा visible थी. There was a king at the top and then वज़ीर और फिर उनके मुशीर, and then और फिर सबसे आखिर में हम जैसे मजदूर जो कि उन किंग्स के लिए कोडिंग करते थे. So animal kingdom में भी these hierarchies are very significant, खास तौर पे when you talk about evolution. अब यहाँ पे you have this animal basically, which is the parent of all of these things, person, cat and rabbit. अगर आप देखें तो हम इन सब चीज़ों का भी एक common ancestor आपको evolutionary tree में अंदर नज़र आएगा. And why is the common parent? Because अगर आप गौर से देखें तो पर्सन में और कैट में और रैबिट में, इन तीनों चीज़ों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं. Like both have, like all of these have 2 eyes
and one brain and heart and lungs with the anatomically pretty much the same structure. So ये चीज़ें अलग-अलग हर किसी क्लास में डिफाइन करने की बजाय, अगेन जिस तरह कि आपको याद हो आपने सर्कल क्लास के अंदर किया था, आप ये सारे कॉमनैलिटीज़ निकाल के एक अलग ब्लैक बॉक्स में डाल दें एंड देन यू use that black box in all of these classes so that you're reusing everything. अब यहाँ पे you see these inverted arrows. The arrows are going from the child class to the parent class. यहाँ पे this is a natural relationship that we can model in from the real life in our code. So real life में भी अगर आपको कोई parent child relationship नजर आती है, you can model it using this structure in coding. So the animal is going to act as a parent, which is going to have all of the attributes that its children are going to have. So the children are going to inherit all of the attributes and the behavior of the parents. That's super important. So this student is a child of person. This student is going to inherit all of the attributes of its person, its parent, and the behaviors. And obviously it's going to provide its own additional functionality. So person animal के behavior, animalistic traits तो inherit करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके अपने मजीद additional functionality और additional attributes भी हैं. So parent class is essentially, also we can call it super class, base class भी कहते हैं इसको. Child class is also called subclass, derived class. जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट के डाटा और एट्रीब्यूट्स बिहेवियर्स को इनहेरिट करता है, और इट कैन पोटेंशियली ऐड मोर बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स पेरेंट, यानी अपने पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है फंक्शनैलिटी. नॉट ओनली दैट, ये अपने पेरेंट के फंक्शन को भी इंप्रूव कर सकता है थ्रू समथिंग कॉल्ड ओवरराइडिंग बिहेवियर, यानी कि नया बिहेवियर ऐड करने के बजाय अपने पेरेंट का बिहेवियर भी इंप्रूव कर ले. So let's take a look at an example here. In order to do inheritance, you first need to use this syntax. Line number 1, class animal, parentheses और अंदर parent object का नाम जिससे आप inherit कर रहे हैं. अब Python के अंदर every single class basically is inherited by this special object class. चाहे वो integer 1 हो, चाहे float 3.14 या string हो, whatever. सारे ऑब्जेक्ट्स की जो पेरेंट क्लास है दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लास. और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस लुक्स लाइक अ फंक्शन बट इट्स नॉट बिकॉज बिगिंस विद द क्लास नॉट डेफ, एंड दिस एंटायर थिंग लुक्स pretty much suspiciously like that that closure function thingy जो कि हमने encapsulation वाले लेक्चर में किया था when we are creating objects using closure functions. अब यहाँ पे what we have here is we have a constructor with the age, but there's no name हम none set कर रहे हैं by default, or there are a bunch of getter setter methods, and then we have a string which we are overriding, right? So this is the object parent class. You specify that in the parentheses, and yeah, and then you have getter setters and then this string method. Now we need to create a child class from the animal. And the way you do it is, again, class cat. अब इसके अंदर parentheses में you specify the name of the parent. और इस केस में the name of the parent is going to be animal. So animal is the cat is going to inherit all of the attributes and the behaviors from the animal class. अब आप देख रहे हैं कैट के अंदर ना तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ना कोई गेटर है, ना कोई सेटर है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज़ डाली है स्पीक मेथड. अब स्पीक मेथड एनिमल के अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इसके पेरेंट को एक्सटेंड किया. सो द कैट कैन स्पीक, एनिमल कैन नॉट स्पीक, राइट? सो दिस इज अ न्यू फंक्शनैलिटी दैट वी आर एक्सटेंडिंग. दिस इज an already given functionality in the parent class. So basically हम parent class की behavior को modify कर रहे हैं, enhance कर रहे हैं यहाँ पे. So this we are overriding. Overriding क्या होती है? When you are using
the same method which is given in the parent class, but you are extending it, you're modifying it and coding it differently basically. So its behavior is going to be different. Name is going to be the same, but functionality is going to be a little bit different. That depends on the child object. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि the cat can access self.name, self.age. अब सवाल ये पैदा होता है कि कंस्ट्रक्टर तो इसमें था ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ से बन गया? एंड द आंसर इज कि आपको याद होगा कि it inherits all attributes and methods from the animal class, or animal class के अंदर we have got our instructor init, and this is exactly the init which is being accessed from the child class automatically, right? और ये set name भी आप देख रहे हैं, ये भी cat class के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपके parent class में है. So parent class के सारे behaviors, सारे methods और सारे attributes the child class can access. And when you print C, it's going to basically say cat colon name and age. It's not going to say animal colon name and age because you're overriding the string function. Basically होता ये है कि जब आप एक method देखते हैं, कॉल करते हैं on an object, तो पहले वो अपनी क्लास में देखता है, फिर अपने पेरेंट में जाता है, फिर अपने उससे ऊपर पेरेंट में जाता है, एंड सो ऑन, जब तक कि उसको या तो मेथड मिलता है या नहीं मिलता. अगर मिलता है तो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं मिलेगा तो इट्स गोइंग टू गिव यू एन एरर. एज सिंपल एज दैट. Right, we talked about that. This is overriding. Overriding, again, it's present at the parent. We are extending, modifying its functionality. This is not present at the parent. We are adding a new method. And then it is coming from the animal, its parent. So overriding a method is creating a new method in the child class, but with the same name that already exists in the parent class. Basically, we are extending the functionality. अब यहाँ पे देखें, आपने line number 1 में एक animal बनाया, line number 2 में you have cat, right? अब cat किस तरह बन गई? Because it can automatically call the constructor of its parent. Cat can speak, sure, but animal cannot speak. This is going to be an error जब आप करेंगे. So child class can use parent class attributes and behaviors, but parent class cannot use child class attributes and behaviors. That's the thing that you have to keep in mind. अगेन यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि अगर एक मेथड आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले वो अपने अंदर देखेगा, उसको मिलता है तो वो कॉल करेगा, अगर नहीं मिलता अपने अंदर तो अपनी हायरार्की में ऊपर अपने ऊपर वाले पेरेंट पे जाएगा, वहाँ से ढूंढेगा उस पेरेंट में उसको मेथड मिला, कॉल करेगा, अगर नहीं तो फिर वो अपने ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन. इट्स गोइंग टू गो अप द हायरार्की unless and until it finds or it does not find the method that it wants to call. So जिस तरह हमने cat इनहेरिट किया एनिमल से, इसी तरह एग्जैक्टली पर्सन भी हम एनिमल से इनहेरिट कर सकते हैं. लेकिन इसमें आप एक चीज़ गौर से देखें, कैट में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया था, वो कंस्ट्रक्टर एनिमल का कॉल कर रहा था, बट इस केस में हम कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं पर्सन का अपना. इसका मतलब कि जब आप पर्सन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. So first of all, this is the name of the parent. This is the person class's own constructor, not the animal class. अब सवाल ही पैदा होता है कि जब आप person class का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो पर्सन का ही होगा, वो एनिमल का तो नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिवन दिस फंक्शन. जब आप फंक्शन ओवरराइड करते हैं, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं, नाम सेम रहता है, तो फिर वो उस क्लास में ही कॉल होता है, अपने पेरेंट क्लास वाला कॉल नहीं करेगा वो, because you're already given the functionality. And then what you're doing here is you're calling the animal classes constructor, because you automatically call नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा. अगर आप ये नहीं करते, let's say आप इसको कमेंट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जो एनिमल क्लास में एट्रीब्यूट्स है नेम और एज, वो पर्सन में नहीं बनेगा. पर्सन में सिर्फ वो नए एट्रीब्यूट्स बनेंगे जो कि आप बना रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर 5 में. फ्रेंड्स, it'll have friends, the person will have friends, it'll not have name and age. So name and age अपने parent के attributes को initialize करने के लिए you have to call the parent class constructor explicitly, and this is the first line that's being done here in this constructor. That's very important, always remember that,
किसी भी बेस क्लास में, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो पहली लाइन होगी, दैट शुड बी इट्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, सो दैट all of the variables are initialized properly in Python. Baki languages mein you probably don't have to do that explicitly, but in Python you have to do it explicitly. And then we are setting the name here, and then we have our friends, list of friends basically. ये सिर्फ list of friends additionally add कर रहा है, and this is a little bit यहाँ पे थोड़ा सा mistake है. So this rectangle should only highlight the friends, not the set name. Set name is just a method which is setting the name. And then we have a bunch of additional methods which are not available in the animal class because animal doesn't have friends, so it doesn't have a get friend method. And we have a speak just like the cat, and then we have age difference basically, जो कि दूसरे person के साथ it calculates the difference of the age. And then again we have overriding the string method here. Basically now जब आप person object को convert करेंगे string में, तो it's going to say person, not animal, with the name and the age, right? I highly recommend that you type this class in especially Python tutor. You comment line number 3 and see what happens. अब देखें फिर क्या होता है कि क्या वो name और age variables properly initialize कर सकता है या नहीं. So try that out, check that out, and then and let me know what happens. So यहाँ पे 3 चीजें हमने देखी. एक तो आपके पेरेंट क्लास से ड्राइव हुआ, दूसरा है कि इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, तीसरा है कि आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें so that the instance variables get initialized properly, and then फिर आप अपने variables इसमें extend कर रहे हैं. Actually काफ़ी सारी चीज़ें देखी, 3 चीज़ें नहीं. और फिर आप अपने नेफ बिहेवियर्स इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जो कि पेरेंट के पास नहीं है. And then you're overriding the string method. Overriding again means providing a different functionality but the same name function, which is in the parent class. These are not in the parent class, so these are not being overridden. This is in the parent class, this is in the parent class, so this is being overridden. Okay, so pause this video and you try this out. इसमें essentially हमने करना ये है कि you have a bunch of objects person and you have a bunch of objects cat. आपने डिक्शनरी बनानी है so that the person object is the key and the cat object is the value. And ये आपने डिक्शनरी बना ली, and then you have to write a function called make pets, which is just going to iterate through the dictionary and it's going to print the name of the person and the name of the column, the name of the pet in a new line, and that's about it. I think it's pretty simple. You should be able to do it, even though I recommend that you do it. So pausing the video and you come back in 3, 2, 1, 0. Big idea. A subclass can use parents attributes. It can override parents attributes, the behaviors, or it can redefine. Actually, it can define new attributes. So use, override, and define attributes or data and methods. The attributes में basically data और method दोनों आ जाते हैं. Student subclass. Now this is inheriting the person class. जो आपको याद है शुरू में एक स्लाइड में हमने डायग्राम देखी थी, हम उसी को pretty much implement करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे देखें, this is the parent class. Now the thing is, student is inheriting both person directly, and animal indirectly through person. Now यहाँ पे student constructor भी आपने खुद से अपना दिया हुआ है. अब क्योंकि आपने अपना दिया है, person constructor call automatically नहीं होगा, जिसका मतलब है कि you have to explicitly call the person constructor yourself as the first line. और यहाँ पे person की attributes इस black box में student के initialize होंगे, and then you are providing a new attribute here, right? So this is the student's own attribute, ये person के पास available नहीं है. And then you're giving a bunch of new functions
So basically this is a new function here, change major, and this is, I believe that this is you're overriding this function, this method. So अगर हम पीछे जाके parent की definition को देखें person की, तो उसमें yes there is speak method, and the parent the person can only say hello. So student के अंदर अगर आप ये function method ना देते और आप करते student of speak, तो student कहता hello. लेकिन आपने एक method दिया with the same name but different functionality. So it means that you have overridden the method called speak. Now when you say student.speak, it's going to randomly select these phrases and then it's going to speak that out. And then you're also overriding the string function. So you're overriding two functions here in the student class, speak and string. And this should be student, not person. That's a mistake. All right, we've done this. Okay. So that was inheritance in a nutshell, and adding new attributes and behaviors and overriding methods that were in the parent class. Now what I want you to pause the video, get a cup of another coffee or a soft drink or a tea, because we are about to start a new topic. Our next topic is class variables, and an example, we are going to create a rabbit subclass that's going to inherit the animal class. So essentially class variables, they are variables that reside inside the class, not inside the objects, and these variables are shared between all of the objects. So यहाँ पे आप एक class देखें जो कि rabbit class है, which is inheriting animal, the usual parentheses syntax. So that's the parent class. अब now line number 2, यहाँ पे एक थोड़ी सी weird चीज़ आपको नजर आ रही है, and that is a variable which is being defined, but that this is not inside any method. This is not inside a constructor. और इसके साथ self भी नहीं लगा हुआ. This is directly defined inside the class. So this kind of variable is called a class variable. अब होता ये है कि these variables are made inside the class object, not the instances of this class. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब animal rabbit object create होता है तो आपका constructor call होता है, which means कि all of these lines will be executed. And when you come to line number 7, this will be run, or you're doing self.rid. देखें, जब भी आप instance variable आपने create करना होता है, आप देते हैं self.something. So that something will be an instance variable, which means कि हर object के साथ वो variable उस box में होगा. यहाँ पे अगर 1000 rabbits आप बनाएंगे तो हर किसी की RID variables 1000 के 1000 की फर्क. So जो class variables हैं, they are only one. So basically this is one variable which is shared amongst all of the instances of this class. और यहाँ पे देख रहे हैं कि class variables का access करने के लिए you have to write the name of the class, not the object itself, right? And then at the end, what you're doing here is in line number 8, you're just incrementing this class variable. The way to access the class variable is using this class name dot and then tag. This is not instance name. So class variables हर instance के बगैर भी basically exist करते हैं. अगर आपने कोई भी instance नहीं बनाया हो, they will still exist. All right. Yeah, that's a variable tag that's shared between objects, and then tags are used to assign unique IDs to objects. जिस तरह कि आप सब students हैं और आपको unique IDs assign हुई हुई हैं. और अब यहाँ देख रहे हैं, this is the constructor of the rabbit class, और यहाँ पे you have a variable which is already created called tag. This is a class variable और इसकी value भी 1 assign हुई हुई है, which you can see here in line number 2. अब देख रहे हैं कि इस point पे अभी कोई भी object नहीं बना हुआ और आपके पास class variable is already existing with the value 1.
अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच मीन्स कि दिस कंस्ट्रक्टर विल रन, आपकी पिछली टैग की वैल्यू विल बी असाइन टू आवर ऑब्जेक्ट बॉक्स, उसके अंदर RID विल बी 1 और फिर आप इंक्रीमेंट कर देंगे क्लास वेरिएबल को विद द वैल्यू 2। अब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर क्या होगा, फिर आप टैग देंगे RID में और उस ऑब्जेक्ट के लिए RID विल बी 2 नॉट 1। सो आप देख रहे हैं रैबिट 1 के लिए RID 1 है, रैबिट 2 के लिए RID 2 है और फिर यू इंक्रीमेंट द टैग विच मीन्स कि इट बिकम्स 3। अब जब अगला ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी RID होगी रैबिट ID 3 एंड देन यू इंक्रीमेंट दैट टैग एंड सो ऑन। सो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट को आप यू कैन असाइन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन हियर बेस्ड ऑन दिस, right? And now we can set the getter methods. Get parent 1, get parent 2 are pretty simple enough, self-explanatory. Basically अब सिर्फ parents return कर रहे हैं यहाँ पे, nothing else. Get RID is returning the RID rabbit ID of the rabbit. लेकिन इसमें एक additional चीज़ हम ये कर रहे हैं कि we are appending it with zeros basically. So कोई भी आप string लें, let me show you in Thoni. अगर आप कोई भी string लें, for example it works in strings, the zfill method. Let's say आपने कोई string लिया which represents a valid number and then you do dot zfill 5, so it's going to convert this 2-digit number into 5-digit number और बाकी जो remaining digits हैं वहाँ पे 0 को pre-fill कर देगा. So for example this is going to become 00013. अगर आप यहाँ पे 5 की जगह let's say 7 करते हैं तो it's going to create a 7-digit number with zeros appended. और अगर यहाँ पे 5 है और नंबर इज नॉट 13 but 113 तो इट्स गोइंग टू prefix pre-append 2 zeros here. So total number of digits and that's going to be 5. That's basically the way to represent unique IDs. That's a convention. You don't have to do it, but that's what zfill does. Okay, now what we're going to do is we are going to implement a plus operator for our rabbits. और आप सोच रहे होंगे कि plus operator का rabbits के ऊपर क्या काम है? Even this is not a mathematical object. So essentially what you can do is you can redefine the meaning of these operators depending on your object. अब इसके अंदर जो plus operator है उसमें 2 rabbits को add करने का क्या meaning है? It's not that mathematical addition that we did earlier. इसमें we are actually specifying our own custom behavior. The meaning of adding 2 rabbits is to create a third rabbit. So here R1 plus R2, R1 is a rabbit, R2 is a rabbit, and that's going to create a new rabbit, R4. यहाँ पे इसकी implementation देख रहे हैं. And the way to basically implement the plus operator is __ add in your code. Self is R1 and other is going to be R2. अगर आप इसको ऑर्डर उल्टा कर देंगे, स्वैप कर देंगे, then self is going to be R2 and other is going to be R1. That you have to keep in mind. And then you create a new rabbit with age 0 and the first parent is going to be self, the other parent is going to be, second parent is going to be other, and then you return that object, and that's pretty much it. And that's how that's what the plus operator means is in case of adding 2 rabbits. Right? And what do you mean by equating 2 rabbits? So for example, rabbit 1 equals to rabbit 2. Again, equals to here doesn't make any sense because 2 rabbits are never going to be same basically. So what equals to mean, we are redefining the meaning of equals here, equality. True rabbits are equal if and only if their parents are equal. They can have different age, they can have different color, they can have different names, but if they have same parent, they are equal rabbits. Basically siblings, we're trying to find siblings here. अब यहाँ पे देखें, हम कंपेयर करेंगे पहले रैबिट का पहला पेरेंट और दूसरे रैबिट का पहला पेरेंट अगर सेम है, और सो फॉर एग्जांपल अगर पहले रैबिट का पेरेंट है अली और दूसरे रैबिट का पेरेंट इज आल्सो अली, और
पहले पेरेंट का जो दूसरा पेरेंट है फातिमा और दूसरे पेरेंट का दूसरा पेरेंट दूसरे रैबिट का दूसरा पेरेंट इज ऑल्सो फातिमा, वी से दीज आर सिबलिंग्स, दे आर इक्वल। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये है कि R1 plus R2 and R2 plus R1, the order is going to be different, so this comparison operator here is going to fail, because now this is going to compare Ali with Fatima and Fatima with Ali. But usko cater karne ke liye we can compare the second parent with the first parent and the first parent with the second parent, and this is going to pass. So इनमें से कोई एक condition भी true होती है, this means कि दोनों का जो parent है that is the same, and hence you can safely say that these are equal. So we're comparing the IDs of the parents basically, and we know that the IDs are unique because this is the way we are creating our Revit class objects. And the big idea is the class variables are shared between all instances, and if one instance changes the class variable, it is changed for every single instance object. And that's about it for inheritance and the class variables. Now let me show you a trick. Basically very convenient getter setter methods. For example, let's say that you have this animal class. अब आप एक object बनाएं, animal with the age let's say 2. Now watch closely here. Print a dot age. Violation of abstraction, pretty bad, but you can access it directly. Sure, run, it works. In order to avoid this direct access, we have to give a getter method. So def get underscore age, something like this, self, and then you return self.age. Right, now get underscore age, you have to call the getter and then it works, right? और आपको पता है कि जो private members होते हैं instance variables, उनके साथ convention is to use underscore so that मेरे जैसा बंदा उसको बाहर use गलती से भी ना करे, उसको पता चल जाए कि this is private. And when you change that, again the benefit of using these getter methods is कि हमने इसकी internal representation को भी आपके सामने change किया, नाम change कर दिया. But our code is still going to work, right? Like this. Lekin, this is pretty inconvenient to type. Using underscore age is very convenient and tempting, even though this is completely a really, really bad way to write code. So, आपकी उस temptation को पूरा करने के लिए Python is giving you a simple syntax. But before we begin to talk about it, let's do this. इसका नाम हम get age की बजाय अगर खाली age कर दें तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? Well, then you have to do age. Sure, much better, but still you have to give parentheses. That's an inconvenience, right? That अब Python has a secret trick up its sleeves. अगर आपके पास एक function है which doesn't take any parameter, basically zero parameter function, उससे पहले अगर आप करें at property का एक annotation लिखें and then you write your zero parameter function, then you can invoke this function without using the parentheses. Here in this case, you can delete that and you can simply use this. So यहाँ पे आप देखें, please take note that this is not an instance variable, this is a function being called. Okay, अगर आपको यकीन ना है तो print hello and we can run it and you can see that this function is being called here. So at property जब भी आप लगाएंगे किसी भी single zero parameter function से पहले, तो then you can call it using dot notation without those brackets. Fine, ये हमारा getter बन गया with the very convenient syntax. What about the setter? इसको हम set तो नहीं कर सकते. a.age equals to 10. So ये हमें सीधा error दे देगा अभी, right? And the answer is the annotation. Basically, you have to write at age dot
setter, and then def age, self, and then value, and then self dot underscore age equals to value. ये कोई भी implementation आप अपनी मर्जी से इसमें दे सकते हैं, that's completely up to you. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this age dot setter, this annotation basically ये जो नाम है इसका और इसका exactly same होना चाहिए. And then when you do a dot age equals to 10, it's going to invoke this function under the hood, and it's going to replace this value 10 with the parameter here, and set underscore age. And underscore age is our actual instance variable. इसको अगर हम चला के देखें तो आप देखेंगे the result is 10. So to summarize, यहाँ पे this is not an instance variable. Actually यहाँ पे दोनों cases में getter setter methods ही call हो रहे हैं, but we are using the very convenient syntax of and very compact syntax of those instance variables basically. So that's pretty good way of using a getter setters in your code. So that's all, folks. Our syllabus is done. I hope you you understand everything, and see you guys in the final exams and the practical exams, and good luck.